Force and pressure. These are the two parts of the chapter. One is force and the second is pressure. What is force? A pull or push. Any type of pull or push is called as force. Any type of pull or push is called as force. तो ये क्या होता है, मतलब पुल या पुश क्या होता है? अगर हम दरवाजा खोलेंगे तो हम उसको पुल करते हैं. ओपन द डोर इज पुलिंग फोर्स. Closing the door is push. When we are going to give the force as such, it is called as push, and when we are going to apply force as in own direction, it is called as pull. Pulling force. Pushing force or pulling force. Running of cart. रेडी को अगर हम धक्का देंगे, it is called as pushing force. When we are giving force in the forward direction, it is called as push, and when we are taking the force in the reverse opposite direction or own side towards itself, it is called as pulling force. ठीक है? तो प्रॉपर्टीज ऑफ फोर्स क्या होते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ फोर्स. फोर्स कैन चेंज the shape of any object. Shape. Force can change the direction of the objects. Force can move or set off the objects. These are the properties of the force. Force can do any work. Force can do work. Any work. Force can do any work. This, the force property we are writing here. Sometimes we are observing force can do work, and sometimes we are not observing. When we kick the football, that time the ball moves forward. It is called as work is done. And in the other side, when we go to push, apply force over the wall, and wall does not move, that time it is called as zero work done. ठीक है? तो ये होते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द फोर्स. अब अगर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस क्या है. टाइप्स ऑफ फोर्सेस क्या है? It is contact force and non-contact force. Contact forces में क्या आते हैं? Direction force, exploring force and also friction force. तो non-contact force के अंदर क्या आता है? Gravitational force, magnetic force and electrostatic force. First of all, we will go to explain contact forces. Contact forces में भी तीन किस्म के फोर्स आते हैं: डायरेक्शन फोर्सेस, एक्सप्लोरिंग फोर्सेस, फ्रिक्शन फोर्सेस. फ्रिक्शन फोर्स. तो ये डायरेक्ट फोर्सेस क्या होते हैं? डायरेक्शन फोर्स क्या होते हैं? ये कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं, मगर अगर हम फोर्स पुश करेंगे और ऑब्जेक्ट मूव करेगा विद द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इट इज कॉल्ड एज डायरेक्शन फोर्स. दैट इज पुशिंग ऑफ कॉर्ड. Or we can say that pull. When we go to pull any object towards itself, means we are pulling and object comes towards us. It is also called as
डायरेक्शन फोर्स। डायरेक्शन, तो डायरेक्शन फोर्स में हम यही याद रखें कि जिस साइड से हम फोर्स लगाएंगे मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट भी उसी डायरेक्शन में जाता है। सो इट इज कॉल्ड एज डायरेक्शन फोर्स। मोशन ऑफ बाइसिकल इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ दैट केस। ठीक है, तो रोलिंग ऑफ सिलेंडर, रोलिंग ऑफ लॉग, when we are going to push the log and the log runs in the forward direction, then that time it is called as direction force. तो याद आप यही रखेंगे, जब भी हम फोर्स लगाएंगे, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाते हैं उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट्स की मोशन भी बनता है। तो whether it is pulling or pushing force, that time it is called as direction force. डायरेक्शन। तो अब यहां आ गया एक्सप्लोरिंग फोर्स। एक्सप्लोरिंग फोर्सेस आर अपोजिट फोर्सेस। वन बॉडी pulls towards itself and another body also pulls towards itself. For example, tug of war. Tug of war में हम रस्सी यहां से 10 बच्चे खींचते हैं, इधर से 10 बच्चे खींचते हैं, बीच में हम लाइन लगा के, वो भी अपनी साइड से खींचते हैं, ये भी अपनी साइड से खींचते। जब इस किस्म का फोर्स होता है, इन्हीं फोर्सेस को हम एक्सप्लोरिंग फोर्सेस कहते हैं। अपोजिट फोर्सेस होते हैं, सेम फोर्स होते हैं बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इसी तरह हम कहेंगे मसल पावर। अगर एक बच्चा यहाँ हाथ रखेगा, दूसरा एक ऐसे लेने की कोशिश करे, दूसरा इस साइड लेने की कोशिश, अपोजिंग फोर्सेस। अपोजिंग फोर्स आर कॉल्ड एज एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। ठीक है, तो थर्ड पार्ट इज frictional force. Frictional force is also a opposite force. It is also a type of exploring force. For example, when we are going to apply brake over the vehicles, brakes are opposing forces and the vehicle has moving force. ठीक है, गाड़ी का जो एक्सेलरेटर होता है वो आगे लेता है इस डायरेक्शन में, ब्रेक रिवर्स फोर्स उसका होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अपोजिट फोर्स। फ्रिक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज अपोजिट फोर्स। वन अनदर स्लाइडिंग मोशन, वन in opposite direction.